सो गाइस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज का व्लॉग कुछ इस तरह का है कि आज हम जा रहे हैं लंदन ज़ू। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं दिखाती हूँ कि कैसा है ज़ू, और बच्चों के लिए वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है वो ऑनलाइन इसकी टिकट बाय करनी पड़ती है, और वो भी मैं आपको सारा बता देती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, और होपफुली आप इंजॉय करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगे। तो लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे हम निकल चुके थे अपनी जर्नी की तरफ, और लंदन जो है जो वो सेंट्रल लंदन में है। तो बस अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। टिकट हमने ऑनलाइन बाय कर ली थी, तो बस एंटर होंगे और उसके बाद फिर ज़ू विज़िट करेंगे।
the perfect place to be because Penguin Beach is actually the largest penguin pool in the whole of England. We have close to 500,000 litres of water and over 70 individual penguins. Now around the world there are actually 18 different species of penguin. Does anybody know what the biggest penguin is? You can tell by the decor and my terrible Spanish. They are native to the coasts of Peru and Chile in South America. So although penguins do come in different shapes and sizes and they come from different places, there is... Now fish is very important to penguins. It makes up about 80% of their diet and the other 20% is made of things like squid and crustaceans such as krill. Now because they eat so much fish, we actually feed the penguins up to 8 times a day here at London Zoo. So that makes sure they've each got the opportunity to get some. So don't worry, if any of them didn't get any now, they will get some later as well. Especially since Jess has a very big bucket of fish. Now as Jess is Look, Nile penguins is eating. Spot any other... Now they're basically this. There we go. This is Swifty. They're basically the same size as the adult penguins, but if they don't have a white stripe on their head or a black strap on their chest, then congratulations.